أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك वसल्लम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आप सबका एसडीआई उम्मीद के वीकली वेबिनार में मैं आपका होस्ट इरफान मेघानी तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। A warm welcome to all of you to our weekly webinar in which we cover various topics for our students community in the areas of education and career development. तो आज फिर से टीम एसडीआई उम्मीद इज बैक एक नए टॉपिक के साथ ऑन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन पोलैंड। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो है वो अब्रॉड में भी स्टडीज करना चाहती है, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, इस वजह से वो वहां जा नहीं पाते। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक टॉपिक रखा जाए ऑन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन यूरोप एंड स्पेसिफिकली इन पोलैंड। तो इसी टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये वेबिनार रखा हुआ है, जहां पे हम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि क्या क्या एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है पोलैंड में, किस तरीके से आप यूनिवर्सिटीज को अप्रोच कर सकते हो, वीजा प्रोसेस फॉर्मेलिटीज क्या है, इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अगर आपकी स्टडीज पूरी हो जाती है तो फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है इन पोलैंड। तो बिफोर डूइंग दैट, let me start with an introduction of our team Ummeed, SDI Ummeed. जैसे आप जानते हो, SDI Ummeed is a career guidance unit of सुन्नी दावत इस्लामी और हम एजुकेशन एंड सोशल एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व है। एजुकेशन एक्टिविटीज में हमने बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग, हाउ टू सिलेक्ट अ कैरियर, स्कॉलरशिप कैंप्स, plus skill development programs like computer education, accounting software programs like Tally, coding, Excel, ये सब एक्टिविटीज हम बच्चों को कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस एसडीआई उम्मीद जो है वो मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी रखती है। हमने कोविड की हेल्पलाइन लॉन्च की थी, जहां पे हमने काफी सारे लोगों को कोविड रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड किया। हमारी एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल थी फुल 24/7 टू गाइड पीपल ऑन कोविड रिलेटेड इश्यूज। एंड ये सब हम करते हैं अंडर द स्पिरिचुअल गाइडेंस ऑफ आवर दाई कबीर, वकारे दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला, एंड अंडर आवर मेंटर रुकनेश्वरा सुन्नी दावत इस्लामी प्यारे कारी रिजवान साहब, who is also principal of Hashmi High School. He is a mentor, he is a guide, and he is the main advisor for our team. So before we start, let me introduce you to our esteemed guest. I am happy and I am so honored to introduce to you our expert. हमारे expert जो आज है Dr. Muhammad Kamran. Dr. Muhammad Kamran is an assistant professor in Warsaw University. He has done specialization in the human resource management. He has been working in Warsaw in Poland since last 7 years. Dr. Saab is in the teaching profession for almost 15 years. आपने पोलैंड में रहते हुए almost 2000 बच्चों की गाइडेंस की है, and alhamdulillah many of them are from India. Doctor is also an active presenter in many international forums. He has presented his papers in Harvard University, and also he has helped many institutions as well as many corporates on different subjects. Doctor has also done his PhD sitting in Poland. So, Dr. Professor Muhammad Kamran, आपका इस्तकबाल है. We are so honored to have you on our forum. SalaamuAlaikum. Walaikum Assalam. Thank you very much, Irfan Bhai, for my introduction. Yeah. Assalamualaikum, everyone. Good afternoon. I hope everyone can hear me. Yeah. So we are here today for a webinar on the topic educational opportunities in Poland. I hope everyone is okay in your home countries and you are safe and healthy because of this COVID. A lot of things are changing, but I hope everyone is fine at their homes.
So today, thank you so much, Dr. Sam. Thank you. So today we will talk about, you can say, as far as today's seminar is concerned, we will talk about the educational opportunities in Poland. As far as the short, brief introduction of the Poland is concerned, Poland is a country that is the part of the European Union. These are some of the capital city of Poland is Warsaw. Official language of Poland is, you can say, the Polish. You can say a bit difficult language, but not too much like Russian. So we are using the currency. The currency that is being used in Poland is Polish zloty, right? So it's about €1 is equal to 4.5 Polish zloty. You can say if we talk about the Indian currency, it will be about 19, and you can say the other currencies will be $1 is equal to around 3.7 Polish currency. So it's and if we talk about the population of Poland, it's about 38 million people, seventh largest in Europe. So a big country, you can say. If we talk about the neighboring countries, right, you see just like Germany, Belarus, Ukraine, Czech Republic, Russia, right? These are all the neighboring countries, right? So you can go to Germany. For example, I'm here at this moment in Warsaw. If I go to Berlin, Germany, just like it's around 400 kilometers away from here, 4-5 hours drive through here. So Poland is located in Europe, and it's a very, really beautiful country. Yeah, I have visited a lot of cities of Poland, so it's beautiful. Yeah. Thank you so much, Professor. Professor Muhammad Kamran, जो हमारी audience है, if you can speak English, उर्दू भी mix करके थोड़ा अच्छा रहेगा, please. Yeah, sure, I will. So the important thing is कि हमें कब और क्या, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, हमें कब और क्या करना चाहिए, कहाँ पे पढ़ना चाहिए, कहाँ पे हायर स्टडीज करना चाहिए. हम अक्सर और बेशतर हमारा यही प्रॉब्लम होते है, वी आर स्टक. For example, okay, right after you can say bachelor degree, or right after you can say intermediate education, 12th standard. So we are thinking about कि हमें कहाँ पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस कंट्री का. So there are different perspectives. हमारे कौन से पर्सपेक्टिव हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, और पीपल कैसे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है वहां पे, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, आफ्टर स्टडीज सेटलमेंट के क्या चांसेस हैं. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी शुड कंसीडर wherever we are going. So as far as the Poland is concerned, in all these perspectives, Poland has a bit advantage, you can say, over the other countries. For example, Poland में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे quality education है और expensive नहीं है. It's not very expensive indeed. So, for example, if I'm talking about India, Pakistan, Bangladesh, right? So just like this is not so expensive as others. For example, if you want to study in Poland, you can spend 3,000 to 4,000 euro per annum. That is the per annum tuition fee for different good universities. Moreover, part-time jobs की बहुत ज़्यादा अच्छी opportunities हैं यहाँ पे. And we have a job study search visa as well. After education, we can stay here. Community is very good. People are very cooperative. Job market is very good, you can say. So whenever you start thinking हमें कहाँ पे ज्वाइन करना है, तो हमें इन कुछ फैक्टर्स को अपने ज़हन में रखना है कि हम कहाँ पे, तो कहाँ पे जाना है, क्या जाना है, करेंसी क्या है, लाइफ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, पार्ट टाइम जॉब्स क्या है. इन तमाम के तमाम फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं. उसके बाद और इंशाल्लाह ये सब फैक्टर्स हम हमारे स्लाइड्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह. Right, sir? जी, बिल्कुल. As far as you can say the universities are concerned in Poland, right? So they are introducing more than 500 courses with undergraduate, postgraduate and PhD positions. बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वॉर्सो में, क्रॉको में, ऊज में, डिफरेंट सिटीज में, जो कि ऑलमोस्ट तमाम साइंस डिसिप्लिन को कवर कर रही हैं, तमाम सोशल साइंसेस को कवर कर रही हैं, बिजनेस को कवर कर रही हैं, आर्किटेक्चर को, मेडिसिन को, all the area of studies they are covering. So they are providing really a good education.
in terms of quality education and in terms of cost effective as well. तो ये तमाम के तमाम एरियाज हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी 12th स्टैंडर्ड ग्रेड के बाद आप लोग बैचलर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, बायोसाइंसेज, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, any field you can say, so you can join Poland. These are very good opportunities here in Poland. So you can choose any discipline whatever you want to, और आप किसी भी डिसिप्लिन में इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपके लिए वो आप पोलैंड में चूज कर सकते हैं. If we talk about the admission process, right? So सबसे ज्यादा अहम जो चीज है एज ए स्टूडेंट या एज ए लर्नर हमारे जहन में ये आता है कि हमें एडमिशन कैसे लेना है. सो नॉर्मली एज साउथ एशियन पर्सपेक्टिव हम लोग कंसल्टेंट्स के पीछे भागते हैं, हम लोग लोगों को कोई हमें गाइड कर दे, राइट. तो हम लोग समझते हैं कि हर चीज हमने लोगों से बोरो करनी है. ये बहुत ही एक ओल्ड स्टाइल फैशन है, राइट. तो इस वक्त जो जरूरत है वो ये है, ट्राई टू बिलीव ऑन योरसेल्फ, राइट. बहुत सारे पीपल हैं जिस तरह मैं हूँ, इरफान भाई, और बहुत सारी एनजीओ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हेल्प करने के लिए, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं, वो तमाम के तमाम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं. तो माय फर्स्ट सजेशन दैट ओके यू शुड बिलीव ऑन योरसेल्फ फर्स्ट, ट्राई टू चूज द गुड यूनिवर्सिटी. I will share different links where you can find different good universities on the web. You can browse them. Admission process is very easy as far as the admission is concerned. Practically speaking, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज की तमाम इंफॉर्मेशन हर यूनिवर्सिटी की रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे अवेलेबल होती है. तो अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, सबसे पहले आप, अगर आपने पोलैंड चूज कर लिया तो आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें. After selecting a university, we are offering 2 sessions per year in Poland. One is the winter semester that is approaching in October, and the other is, you can say, the summer semester that will be approaching in February. So हमारे पास 2 सेशन हैं, but most of the universities, public sector universities, you can say 60 to 70% universities are offering one-time admission in a year in most of the disciplines. तो आपको जो फोकस करना है वो ये करना है, फॉल सेमेस्टर को आपने फोकस करना है जो कि अक्टूबर में स्टार्ट होता है. अगर हम फॉल सेमेस्टर की बात करें तो आपको बेस्ट टाइम क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपका बेस्ट टाइम होगा मई जून में. आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना शुरू कर दें, यूनिवर्सिटीज को देखना शुरू कर दें. अमूमन मई में एडमिशन ओपन हो जाते हैं, जून में एडमिशन ओपन हो जाते हैं. आप लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स को ब्राउज करना शुरू करें. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन का तमाम प्रोसेस अवेलेबल होता है. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं. तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है. आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करें, एडमिशन के टैब को विजिट करें, वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करें मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड देन यू कैन फिल द फॉर्म ऑनलाइन. यू कैन सबमिट ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, राइट. So because of this pandemic thing, most of the universities are working online. तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. Believe me, just like I'm guiding people since last 15 years, more than 15 years in higher education. If you believe on yourself, you can do everything. I believe it, right? So as far as the admissions are concerned, so come back to the point. तो फॉल सेमेस्टर में आपको स्टार्ट करना है मई जून से, और स्प्रिंग के लिए आज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल यू कैन स्टार्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिशन प्रोसेस ले लेता है 1 month अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद वीजा प्रोसेस भी कुछ टाइम लेता है, अराउंड 2 weeks to 6 weeks फॉर एग्जांपल, राइट. तो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ एट लीस्ट 3 months बिफोर. अगर आप फरवरी सेशन में आना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर नवंबर में अपने आप को प्रिपेयर करना है. और अगर आप अक्टूबर का सोच रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, आपने मई और जून से अपने आप को स्टार्ट करना है. इसमें डिफरेंट फॉर्मेलिटीज होती हैं. आपका डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है, आपका आइल्स प्रिपरेशन है, आपका डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की फीस है, वीजा प्रोसेसेस हैं. ये तमाम की तमाम चीजें हैं जो कि 2 से 3 माह लग जाते हैं आपको, प्रैक्टिकली स्पीकिंग. तो यू कैन फोकस इन अक्टूबर सेशन
and you can focus in the February session, right? It's very easy, right? I will share a link. You can say, for example, studyinpoland.pl, for example, this is one of the good website. If you can go through it, then all the universities, all the programs are available over there. तो इन दिस वे आपको ये प्रोसेस था एडमिशन का। एडमिशन में यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा प्रोफेसर साहब एक क्वेश्चन है कि ये जो यूनिवर्सिटीज का जैसा आप बता रहे हो, तो कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अप्लाई करना होता है या हर एक यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली अप्लाई करना होगा हमें? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच इरफान भाई, आपने बहुत। यहाँ पे जर्मनी की तरह नहीं है, जिस तरह जर्मनी में जो है एक अकाउंट बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। यहाँ पे पोलैंड में ऐसे है कि आपको हर यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अप्रोच करना होता है। ये जो मैंने आपसे वेबसाइट शेयर की है स्टडी इन पोलैंड, इसमें यह है कि आप अपना प्रोग्राम वाइज यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आर्किटेक्चर में करना चाहते हैं तो वो आपको बताएगा कि आर्किटेक्चर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। अगर आप कोई इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको वेबसाइट बताएगी कि आप किस तो हर यूनिवर्सिटी को आपने डायरेक्ट अप्रोच करना होता है। यहाँ पे पॉलिश में भी प्रोग्राम्स हैं, इंग्लिश में भी प्रोग्राम्स हैं। इंग्लिश में काफी यूनिवर्सिटीज आजकल अपने प्रोग्राम्स को ऑफर कर रही हैं। तो जो मैंने वेबसाइट बताई आपको वह स्टडी इन पोलैंड विदाउट एनी स्पेस, studyinpoland.pl. If you go through this website, you can search any program, any university, a lot of details is there, you can say. So this is the central website which will guide you towards that how you can live life in Poland, what is the expenses, all these details is available, general details are available there. And if you want to go to specific information in sub university, तो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके आपने इसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। देन आपने फिर यूनिवर्सिटी से राब्ता करना है। So Professor Saab, many people are trying, so let me just share with them www.studyinpoland.pl. Yes. So please use that. Not .com, .pl. Yeah. www.studyinpoland.pl. Yes. Jazakallah, sir. Please, let's go ahead. Yes. तो ये तो हो गया एडमिशन का। अगर हम कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करें, बहुत ज्यादा हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इफ यू जस्ट चेक द QS standard of education, higher education institution in Poland, different global ranking है। तो University of Warsaw, Jagiellonian University, Warsaw University of Technology, right? University of Warsaw is a general university, public university, right? That is located in Warsaw, right? It has more than 50,000 students. तमाम programs आपको ऑफर करती हैं। Jagiellonian University is in Krakow. Warsaw University of Technology एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। इसी तरह Warsaw Medical University है जो कि वॉर्सो में है, जो कि आपको मेडिसिन की, सर्जरी की एजुकेशन देती है। और इसी तरह ये तमाम की तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं ये अवेलेबल हैं, जो कि गुड रैंक यूनिवर्सिटीज हैं और इनमें आप लोग अपने रेलेवेंट डिसिप्लिन की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अनदर गुड क्वेश्चन जो अक्सर और बेशतर पूछा जाता है कि ओह पैसे कितने लगेंगे, ये तो बताएं। या आपने कंसल्टेंट से नहीं पूछना है कि पैसे कितने लगेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? ये आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पूछना है। हमारे यहाँ अक्सर बेशतर यही होता है कि हम कहते हैं कि जी किसी एजुकेशनल कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं जी भाई बताएं कितने पैसे लगेंगे वहां पे एजुकेशन हासिल करने के लिए। ये कुछ ठीक अप्रोच नहीं है, राइट? अच्छी ठीक अप्रोच क्या है? आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और वहां पे आपने देखना है जी पर सेमेस्टर क्या फी है। उसके अलावा आपको लिविंग का भी अवेलेबल होता है, अकोमोडेशन का भी, हर चीज, हर डिटेल, माइन्यूट डिटेल जो आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन अगर कोई चीज दे सकती है तो यूनिवर्सिटी की रिस्पेक्टिव वेबसाइट दे सकती है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, इरफान भाई इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट? एजुकेशनल इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, जो वेबसाइट है वो अपडेट होती रहती है, शायद हमने कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन ना ली हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। आई एम टीचिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो, ऑल्सो आई हैव डन माय PhD एज वेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अरसे से। तो यहाँ पे हम लोग करवाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
जो कि मास्टर्स प्रोग्राम है, इसकी एनुअल फी तकरीबन 4000 यूरो है। और इस तरह वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में तमाम के तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, वट एवर द केसेस, आप जो इंजीनियरिंग सोच सकते हो वहां पे आपको मिलेगी वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी में वॉर्सो मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो है फॉर एग्जांपल। इसी तरह वॉर्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वॉर्सो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है। प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे पास वाजार्स्की यूनिवर्सिटी है, विस्तुला यूनिवर्सिटी है, ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम जस्ट इसको समराइज करें तो बैचलर की जो फी है तकरीबन अराउंड 3000 यूरो पर एनम, एक साल की फीस 3000। मास्टर्स की अराउंड 3 to 4000 यूरो पर एनम। अगर आप लिविंग लगाएं, लिविंग इज नॉट टू मच, यू कैन से लिविंग आपकी अराउंड 300 यूरो 250 यूरो, यू कैन से आप 1000 PLN में तकरीबन आप आराम से अपना गुजारा कर लेते हैं एज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट का डॉम ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, इट डिपेंड अपॉन योर लाइफस्टाइल एज वेल। अगर आप बहुत बाहर रहना चाहते हैं प्राइवेट अकोमोडेशन में फिर तो एक्सपेंसिव होगा, तो लेकिन यूनिवर्सिटी का डॉम बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आपको 100 यूरो पर मंथ में आपको यूनिवर्सिटी का डॉम मिल जाता है, 100, 125, 150, और इसी तरह आपका 100, 125, इतना ही आपका तकरीबन फूड, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इनका एक्सपेंस होता है। कामरान सर, ये यूनिवर्सिटी का डॉम, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हो गया, आप इसको जरा लॉन्ग में ये एक्सप्लेन करेंगे? मैं डॉम मींस हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, ये डॉम से हॉस्टल। मुराद हॉस्टल है आपका, ठीक है। डॉर्मिटरी एक लफ्ज है, तो डॉम हम ज्यादातर निकल जाता है। तो हॉस्टल में अगर आप रहना चाहते हैं, हॉस्टल बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। आपको फूड नहीं मिलेगा हॉस्टल में, ये बात याद रखिएगा। खाना आपको खुद ही बनाना है, क्योंकि हम जिस तरह हम लोग देसी फूड के होते हैं, हम लोगों को देसी स्पाइसी फूड पसंद होती है। If you want to enjoy this kind of things, you have a lot of restaurant, you can say, here in Poland, in Warsaw, you can go there. But student को ये ज्यादातर स्टूडेंट यही प्रेफर करते हैं कि वो अपने घर पे यूज करें इस चीज को। तो आप लोगों को कुकिंग खुद ही करना होती है, बाकी आपका लिविंग इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो ये चंद गुड यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एक और बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन आया है कि ये जो फीस के बारे में लिखा गया पर ईयर, तो ये फीस वी नीड टू पे एट वन गो और देयर इज सम काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल, लाइक एक सेमेस्टर का एडवांस में पे कर दीजिए, फिर दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद दूसरा बहुत सेमेस्टर अच्छा सवाल है आपका इरफान भाई, बहुत अच्छा टेक्निकल सवाल है आपका। इसमें देखें, जब आप लोग एडमिशन लेते हैं ना, फर्स्ट टाइम आपको पहले एक साल की फीस देनी पड़ती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है, और इवन के एम्बेसी का भी यही पैटर्न है कि वो लोग ज्यादातर यही होता है कि आपको पहले साल की पूरे साल की फीस जमा करवानी पड़ती है यूरोज में। उसके बाद जब आप लोग वीजा लेके यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बाद आप पर सेमेस्टर फी पे कर सकते हैं। इवन कि अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी है तो कुछ आपको स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी प्रोग्रेस अच्छी है तो इवन आप पर मंथ भी पे कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन योर प्रोग्रेस, इट डिपेंड अपॉन योर नेगोशिएशन। अगर आप बातचीत करते हैं यूनिवर्सिटी, तो मोस्टली सिंपल पैटर्न, फर्स्ट ईयर full year fee in euros, from second year, from third semester onwards, you will pay per semester fee in Polish zloty or in euro, depend upon you. Okay, and आपने जैसे यहाँ कोर्सेज के नाम लिखे हैं, तो which are the most common courses या which are the most sought out courses, because you have been interacting with the students community, so where are students generally preferring to join? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड। इसमें जो चीज है, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हियर, बहुत सारी। आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी, गूगल, सिटी बैंक और माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने यूरोपियन हेडक्वार्टर्स पोलैंड में मूव करना चाह रहे हैं। पोलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज वेरी गुड, राइट। तो मोस्टली हर तरह की जॉब्स अवेलेबल होती है, लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन करें, फॉर एग्जांपल बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आपको बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है, और आईटी और कंप्यूटर साइंसेज में बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। आपको बहुत ज्यादा कंपनीज, आपको ये तमाम की तमाम जॉब्स अवेलेबल है। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी तो पूरी दुनिया में आपको पता है ग्लोबली एक्सेप्टेबल एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, राइट। यू कैन से जॉब अपॉर्चुनिटीज वेरी हाई। और बिजनेस हो गया,
उसके अलावा जो है आप इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, लेकिन बिजनेस और आईटी हमेशा टॉप पे रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिजनेस आईटी एंड इंजीनियरिंग एज वेल। इंजीनियरिंग में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस तरह की तो बेहतर है, लेकिन अगर आप बहुत आर्किटेक्चर और ये वो, इसमें थोड़ा सा लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाता है। आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा काम करती हुई नजर आएंगी, you can have a very good time part-time job or full-time job in English speaking organization most of the time in business and IT most of the time. And just to share my experience, Kamran bhai, as you know, मैं भी 3 साल से पोलैंड में हूँ। मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा हुआ है एविएशन सेक्टर में जाते हुए, and because aviation across Europe is very expensive, but in Poland it's not that expensive. And इनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जिनकी जो यूनिवर्सिटी है फॉर एविएशन, दैट इज आल्सो वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड। तो काफी यूनिक कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड काफी यूनिक कोर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। एविएशन हो गया, मेडिसिन हो गया, ये बहुत अच्छी हाईली क्वालिटी एजुकेशन है एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव इंडीड। तो ये तमाम के तमाम डिसिप्लिन हैं, तो इनमें आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी को, एक और बड़ी अच्छी सजेशन है, आप लोग जब भी अप्लाई करें तो बी कॉन्फिडेंट, राइट? यू शुड अप्लाई इन अ गुड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। You can say visa acceptance is directly proportional to your university reputation. अगर आप एक दो कमरों की छोटी सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट ना करें। वीजा ऑफिसर इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, उसको पता है आप क्या करने जा रहे हो। तो कोशिश करें अच्छी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें। अच्छी यूनिवर्सिटी, अब अच्छी यूनिवर्सिटी की क्या डेफिनेशन है? इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन। आप क्या कर सकते हो? आप डिफरेंट हैं, जिस तरह क्यूएस रैंकिंग है, पूरी दुनिया में ग्लोबल रैंकिंग है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट HEI, ये एक रैंकिंग है, बहुत अच्छी है। अगर आप इन दोनों पे यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रैंकिंग चेक करेंगे, अगर कोई यूनिवर्सिटी टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में है फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, राइट? ओके। तो अगर इन माय ओपिनियन अगर कोई यूनिवर्सिटी टॉप 1000 में है तो इसका मतलब ये गुड यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो टॉप 1000 में कभी भी नहीं आती, बहुत एक्सेप्शनली बहुत कम है जो आती है। बाकी ज्यादातर जो है इसमें स्टेट की यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, प्रॉपर सेटअप करें, और उसके बाद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उसके अलावा एक बड़ा ही जो क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है कि हमें पे ही करना पड़ेगा फीस को? तो जहां तक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज का ताल्लुक है, देयर आर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल स्पेसिफिकली फॉर हायर स्टडीज। इफ आई कैन से मास्टर्स एंड PhD स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं। मास्टर्स इवन के PhD में बहुत ज्यादा स्कोप है, स्पेसिफिकली इन प्योर साइंसेस। फॉर एग्जांपल अगर आपने फिजिक्स में किया हुआ है, केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, बायो साइंसेस में, राइट, इनमें अगर आपने किया हुआ है मास्टर्स और आप PhD के लिए आना चाहते हैं तो पोलैंड इज ए हेवन फॉर यू, यू कैन से। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। अगर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखना चाहें कि कौन से इंस्टीट्यूट कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, तो मैंने आपसे 3 बहुत अच्छी वेबसाइट्स, नावा जो कि एक पॉलिश गवर्नमेंटल वेबसाइट है, इस पे तमाम की तमाम स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप बेसिकली, मैं बार बार कहता हूं इस चीज को कि अपने आप को पहचाने, आप हु यू आर, राइट? अपने आप को जाने, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने ज्यादा एनर्जेटिक हैं। आप बार बार लोगों से ना पूछें कि स्कॉलरशिप कहां पे अवेलेबल है। यू आर द बेटर जज फॉर यू। तो नावा ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट्स पे जाएं, खुद ब्राउज करें, खुद देखें। उसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो फिर आप डिफरेंट ग्रुप्स पे जाके अपनी क्यूरी करें, तब लोग बहुत अच्छा आपको गाइड करेंगे। अगर आप एक रैंडम खेलते हो ना कि प्लीज गाइड मी अबाउट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, इसका मतलब है आप ब्लैंक, आप सीरियस नहीं है, आप सिर्फ मजे ले रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मजे नहीं लिया करते लाइफ में। ज्यादातर ये है कि थोड़ा सीरियस होना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है। स्कॉलरशिप इज फॉर दोज हु आर कॉम्पिटेंट, हु आर हार्ड वर्किंग, राइट? तो अपने आप को अपने प्रूव करना है कि यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू आर वेरी सीरियस कैंडिडेट। वो आप कैसे कर सकते हो? आप खुद इन वेबसाइट्स पे जाएं,
Nava.gov.pl, researchinpoland.org, you can say. European scholarships are also available. अगर पोलैंड के नहीं है तो ये यूरोपीय यूनियन की एक वेबसाइट है, यहाँ पे जॉब्स और फंडिंग्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे जा सकते हैं. अगर आप आज से इन वेबसाइट्स को विजिट करना शुरू करेंगे, आई बिलीव कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. योर लाइफ विल बी चेंज, योर थिंकिंग विल बी चेंज. You will not ask such a, you can say, the dummy question, what are the scholarship opportunities in Poland? You will go through the website, you will go through all the processes, and then you will came to know that how good opportunities are available in Poland. Poland is beautiful, Poland is good, and you have a lot of scholarships, but it depends upon how much serious you are, how much competent you are, you can have this scholarship. Jazakallah. And I just want to tell student community that even Professor Muhammad Kamran has availed scholarship from these Polish universities to pursue his PhD degrees. So ये नहीं है कि ये scholarship सिर्फ Polish citizens को मिलेगी. अगर आप जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, if you are really interested and you do your groundwork, foundation work properly, you can also get these scholarships and go through these websites. If you have any trouble, please connect with SDI Ummeed team. We have our own scholarship volunteers who will support you. But most importantly, you need to do your research, come up with specific questions, and Alhamdulillah, Inshallah, we are there to support you. Jazakallah. Over to you, sir. Exactly. Thank you. So, European Union के scholarships हैं. Yes, I got 2 times scholarship from Erasmus Mundus program, right? This is one of the prestigious scholarship, you can say. In the master program, they are offering €1,000 per month to the scholarship holder. For the PhD, they are offering most of the time €1,500 per month, you can say. And they are paying all your fee, all your other expenses to you, you can say. Very good scholarship. I have won this scholarship, luckily, you can say 2 times for my master research and for my doctoral research as well. And I have joined this Polish University of Warsaw for my doctoral degree. On this kind of scholarship. So it's not a, you can say, big deal के scholarship नहीं मिलता, scholarship मिलता है. But कैसे? Hard working से, मेहनत से आप explore करें, अपने आप पे believe करें. Once you are starting believing yourself, then you can do anything. Then sky is not more the limit, you can say. You can have more than other skies. You can browse anything, you can say, in the world, right? तो आप इन स्कॉलरशिप वेबसाइट्स को देखें, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है. बट अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुएट लेवल पे, इट मींस अंडर ग्रेजुएट, बैचलर लेवल पे बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स आपको नहीं मिलेंगे. ज्यादातर आपको स्कॉलरशिप्स मास्टर्स पे मिलेंगे और सबसे ज्यादा आपको पीएचडी के लिए अवेलेबल. इवन के पोलैंड में 2018, राइट आफ्टर 2018, पोलैंड हैज चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डॉक्टरल रिसर्च, यू कैन से. And every doctoral student will be given scholarship. So if you are getting admission in any university in Poland in PhD, they will offer you scholarship of 2100 PLN for the first 2 years and around 3500 PLN for the next 2 years for these 4 years program. And they will pay all, you will not pay anything, just like fee or anything. You have to pay only your living expenses और योर मेडिकल एक्सपेंसेस. मेडिकल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी है, यानी कि आप एक इंश्योरेंस ले लेते हो, इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप इस इंश्योरेंस के थ्रू, इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ डॉलर्स में, आप समझ लें कि $10 पर मंथ, €10 पर मंथ स्टूडेंट के लिए जो आपकी है मेडिकल इंश्योरेंस, वो बहुत ज्यादा सस्ती है आपके लिए. तो इस तरह आप कर सकते हैं. तो ये तमाम की तमाम वेबसाइट्स के थ्रू आप अपने स्कॉलरशिप को भी गेन कर सकते हैं. Alhamdulillah, it is really heartening to know that all your fees can be covered through scholarship. This is a very good news for our student community. So the message is clear, dear students. If you believe in yourself, अगर आप hard work करते हो, there is a scholarship opportunity which covers 100% of your fees. So here is the right path for you. Let's go ahead. Thank you, sir. Exactly. उसके अलावा चलें जी, admission is finalized. Once admission is finalized, then you will go through the visa process, right?
तो एज ए साउथ एशियन कैंडिडेट हम परेशान हो जाते हैं, वो एम्बेसी क्या करेगी हमारे, राइट? व्हाट विल हैपन इन द एम्बेसी, राइट? It's not like that. Be confident, right? Just like you have embassy of Poland in India, in Pakistan, you can say in just like in different countries, right? So you can go through your consulate. Just like in India, you have the consulate in Mumbai and Delhi, right? So it's like that. So you can go through. In Pakistan, we have in Islamabad, in you can say Nepal and Afghanistan. These people are also coming to India as well, right? So these are South Asian countries are basically focusing, right? So what you will do, you will apply for the long-term visa, D visa, right? Normally first time आप 1 साल के लिए वीजे के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे लिखा होता है कि आप कितने दिनों के लिए जाए, for how long you are applying for the visa. So for the first time you will apply for 365 days, right? Starting from your education. For example, if your study is being started in October 1, then you will apply from October 1 to September 30th, right? Full 1 year duration, right? आप डी वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, वीजा एप्लीकेशन सेंटर अवेलेबल हैं, एम्बेसी की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, कुछ कंट्रीज में वीजा एप्लीकेशन सेंटर के थ्रू जाते हैं, कुछ कंट्रीज में आप अपने ही एम्बेसी की वेबसाइट के थ्रू जाते हैं आप। तो आप अप्लाई करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, बायोमेट्रिक एंड एप्लीकेशन फी पे करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, और आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। अमूमन प्रोसेसिंग टाइम 14 to 60 days, you can say, right? Minimum 2 weeks and maximum it could be 2 months sometimes, right? Depending upon the number of applications, depending upon the load on the embassy, right? It will be like that. So this is the reason I told you that you should prepare yourself at least 3 months earlier. If you want to join, you can say February intake. आपने शुरू करना है February intake के लिए अक्टूबर नवंबर से, और आपने शुरू करना है अक्टूबर intake के लिए मई जून से। This is the right path. आप अप्लाई करेंगे, एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से पूरी की तमाम अगेन मैं आपसे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि start believing on yourself. Self-awareness, you can say. This is one of the path, you can say, how you can explore yourself. अपने आप पे believe करना शुरू करें। सबसे पहले जब आप शुरू करेंगे, for example, अगर if I want to share my own story, you can say, I was here in Warsaw, you can say, then I started applying. I have to go to, you can say, USA. So just like I just opened the website of the US Embassy in Warsaw. तमाम एजुकेशनल तमाम डिटेल्स वीजा की अवेलेबल थी, वो मैंने फिल की। मैंने कभी ये नहीं सोचा, अपने आप से कभी नहीं पूछा कि भाई ये कोई मुश्किल काम है। मैंने वो फॉर्म फिल किया, एंड बिलीव यू मी, फ्रॉम हियर दे हैव गिवन मी यूएस वीजा, you can say, in 72 hours, 3 days, you can say. Super. Similar is the case. Canada visa, when I apply for the Canada visa, they have given me for in 5 days only, you can say. UK visa, 5 days, 1 week, right? Process is very easy. Only the thing is whether we are believing on ourselves or not. So try to start believing on yourselves, right? Go through the embassy website will not bite you, just like, right? ये आपको खा नहीं जाएगी, उस पर कोई आपको, वो इंग्लिश में लिखी हुई है तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट बिलीविंग ऑन योरसेल्फ, गो थ्रू द एम्बेसी वेबसाइट। उससे पहले मुझे यही होता था, कई मेरे दोस्त थे, फॉर एग्जांपल जब मैंने यूएस का वीजा अप्लाई कर रहा था तो कुछ मेरे यहाँ पे इंडियन दोस्त भी थे और कुछ मेरे यहाँ पे बांग्लादेश से, नेपाल से भी दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कामरान, मैंने कहा कि चलें यूएस चलते हैं, जरा देख के आते हैं क्या हो रहा है वहां पे। तो आपको पता है, उसने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं कि आप सीरियस हैं? तो मैंने कहा मैं अक्सर मजाक नहीं किया करता। Then I have just shared this opportunity in USA that we can go on this conference, we can present our research over there. So then my 3 other friends, you can say, we apply for the visa and we got the visa and we have traveled together. माशाल्लाह। So माशाल्लाह। So always the message is clear that कोशिश होती है कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, तमाम लोगों से शेयर किया जाए, तमाम अपने दोस्तों से, कोई कहीं से भी बिलोंग करता हो। फिर हम लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 4 दोस्त थे जिसमें से एक पाकिस्तान से बिलोंग करता था, एक इंडिया से, एक नेपाल से और एक बांग्लादेश से। हम 4 लोग इकट्ठे यूएस से गए थे। We have visited USA all together.
in one go. And I was the one who was initializing this process. So it's easy. Very good. My point is, it's easy to apply for the visa. Super. So you're saying that staying in Poland doesn't restrict you to go anywhere else. Even through Poland, it is very easy to get even further education opportunities outside Poland, present some papers in USA, whatever is needed. There is enough support provided from the authorities. Exactly. Jazakallah, sir. Let's go to the next slide, sir. और उसके अलावा अगर ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं वीजे के लिए, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है. इसमें वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका कवर लेटर है, फ्लाइट आइटनरी आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हैं. ये आपको फ्लाइट की टिकट लेने की जरूरत नहीं है, कंफर्म टिकट. आइटनरी सिर्फ आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी पे जाएं, वो आपका प्रपोज टेंटेटिव प्लान होता है. दिस इज अ टेंटेटिव प्लान फॉर योर ट्रैवल. फॉर एग्जांपल, इफ योर सेमेस्टर इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम October 1 and you are finishing your, you can say, degree till September 30th, for example. So you can have a two-way itinerary, right? Starting from October 1 and returning to, or it depend upon. Flight itinerary, बहुत easy. It's a very easy to get. Normally it costs nothing, right? You can go to the travel agent. He will take 50 rupees, for example, for the sake of printout, and not more than that. And mostly it's also available on the, you can say, the travel airlines website as well. So you can go through flight itinerary, travel medical insurance, authentic medical insurance की websites available हैं Polish Embassy की website पे. आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं, you should approach to these medical insurance companies which are registered from the Polish Embassy, right? Polish consulate. आपने किसी ऐसे के पास नहीं जाना है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है. और ये भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको पॉलिश एम्बेसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, क्योंकि ये चीज भी अपडेट होती रहती है. इसी वजह से हमने अभी आपको नहीं बताया. लेकिन मोस्टली जो गुड इंश्योरेंस कंपनीज इन योर होम कंट्री, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ, यू कैन से, द इंश्योरेंस. सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन, डेफिनेटली आपने जहां पे एडमिशन लिया है, आपने फी रिसीट दिखानी है, आपने 1 साल की फीस जमा कराई है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपने लगाने हैं, अकोमोडेशन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कहां पे जाके रहोगे, योर प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन. इन केस ऑफ एडमिशन, इट्स वेरी इजी टू गेट अ accommodation letter from the university. Most of the universities are providing hostel facilities. So just like if you just request them कि आप मुझे accommodation का दें, वो लिख देते हैं in the letter that we will provide the accommodation when he will reach here, right? And they will charge nothing extra from you, right? You have only the booking from your hostel. So this certificate is required, and it's very easy to get this certificate. Then financial documents, definitely bank statement is required. If you are going on the self-finance basis, you have to show all the expenses that is required for your accommodation. फिर ये सवाल होता है कितने पैसे होने चाहिए अकाउंट में, राइट? ये सबसे पहले सवाल आता है. एटलीस्ट आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री की फी आपके अकाउंट में होनी चाहिए, प्रेफरेबली. अगर पूरी फी 3 ईयर की नहीं है, 2 ईयर की नहीं, एटलीस्ट 1 ईयर की फी होनी चाहिए. और लिविंग जो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है वो अराउंड 670 PLN पर मंथ, जो लिखा हुआ है, यानी कि जो आपको दिखाना ही दिखाना है, फॉर एग्जांपल, राइट? जो कि बनते हैं अराउंड 150 यूरो पर मंथ. फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 साल के लिए आ रहे हैं तो आप 1800 यूरो आप वो दिखा रहे हैं, अपनी 1 साल की, अगले साल की फीस दिखा रहे हैं, अपना लिविंग दिखा रहे हैं. ये आपने अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना है. बैंक स्टेटमेंट आप अपना भी दिखा सकते हैं, अपने फादर का भी दिखा सकते हैं, अपने अंकल का भी दिखा सकते हैं. तो ये इन दिस वे यू कैन शो योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट. और डोमेस्टिक कंट्री प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, डेफिनेटली यू आर प्रोवाइडिंग, एंड योर पासपोर्ट डिटेल्स एज वेल, राइट? So you are, and please cross check this list if they are adding, for example, might be nowadays they are asking for the COVID certification or COVID vaccination, something like that, right? Then if it is available, if it is required by the embassy, please complete all these documents by yourself, right? In this way, you should submit all these documents along with your application form for the visa to the embassy. Professor Saab, Alhamdulillah, we are getting a lot of questions on documentation. Yeah. So let me start first with insurance.
तो ये इंश्योरेंस कितने दिन का लेना होता है और क्या वैल्यू लेना होता है, इसकी कुछ लिमिट है क्या? इसमें आप ट्रैवल इंश्योरेंस जो होता है वो तकरीबन आप फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए लेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि मोर देन सफिशिएंट होती है। अगर आप ऑन द सेफर साइड जाना चाहते हैं तो आप 1 ईयर की भी ट्रैवल इंश्योरेंस ले लें। अमूमन ये ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है वो 3000 यूरोज की वर्थ की होती है, यानी कि आप 3000 यूरो आप पे, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ यूरोज, यू कैन गेट दिस इंश्योरेंस फॉर 1 ईयर इन 100 यूरोज, 100 यूरो, 100 यूरो में आपको पूरे 1 साल की इंश्योरेंस मिल जाएगी। दैट्स वेरी इजी। तो आप 3 माह से लेके, अगर आप सेफर साइड पे जाना चाहते हैं पूरे साल की ले लें, और लेकिन आप ज्यादातर यही करते हैं, लोग 3 माह की ले लेते हैं। दे रिक्वायर फॉर 3 मंथ्स, once they reach here then they apply for the local insurance for the medical checkup, medical facilities this way. Okay. सर एक और क्वेरी है कि ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इसे नोटराइज कराना होता है या अपोस्टाइल कराना जरूरी है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? इसमें डिपेंड करता है, बिल्कुल। इसमें ज्यादातर ये है कि अपोस्टाइल करवाना होता है और नोटराइज भी। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको अपोस्टाइल नोटराइज भी सफिशिएंट होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूनिवर्सिटीज बता देती है नोटराइज इज सफिशिएंट। एंड यू कैन से अगर यूनिवर्सिटी चाह रही है आपसे कि आप एम्बेसी से अपोस्टाइल या लीगलाइज करवाएं, तो ये भी आप करवा सकते हैं फ्रॉम द एम्बेसी। But most of the time, notarize is more than sufficient. But it depends upon, for example, if you are from Nepal or Bangladesh or Pakistan, the requirement could be different. For you, for example, yeah, it could be different. You should check. But university will tell you about that, what exactly you required, right? For example, notarize, apostille, or legalization, right? So all these, most of the time, in the first stage of your admission, right? So most of the time, it is required by the apostille or the legalization. In terms of education certificate, do we have to provide certificates of, for example, our 10th class, 12th class, or the latest education certificate is good enough? Just like, yeah, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपको बहुत ही टेक्निकल सा क्वेश्चन है। इसमें जब आपने तमाम के तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट करवाने होते हैं नोटराइज वगैरह, तो आप तमाम के तमाम सर्टिफिकेट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी लास्ट डिग्री होती है वो आप पॉलिश एम्बेसी से, अगर आपने लीगलाइज करवाना है या अपोस्टाइल करवाना है, तो वो आपने अपनी लास्ट डिग्री करवानी होती है, लास्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर कमिंग फॉर द मास्टर, देन यू हैव टू गेट लीगलाइजेशन फॉर योर बैचलर डिग्री एंड बैचलर डिटेल मार्कशीट। इफ यू आर कमिंग फॉर द डॉक्टरल स्टडीज हियर, देन यू शुड लीगलाइज योर मास्टर डिग्री and master detail mark sheet from the embassy. It will be आपने एक ट्रांसक्रिप्ट करके वर्ड यूज किया था, ये ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट मीन द डिटेल मार्क शीट। ओके ओके। एंड जनरली जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड, उनके अकाउंट्स में तो पैसे होते नहीं है, बट देयर पेरेंट्स डू हैव अ बैंक बैलेंस। तो इन दैट केस रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ लेटर वगैरह लगता है पेरेंट्स की तरफ से to show it to the embassy? How does it work? इसमें सिंपल ये होता है, इसमें आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। जस्ट लाइक स्टैम्प पेपर के ऊपर आप एक एफिडेविट आपके फादर बना देते हैं कि ये मेरा बेटा या ये मेरा भांजा भतीजा ये पोलैंड जा रहा है एजुकेशन के लिए, all the expenses will be bared by me and my bank statement is attached here with, right? You can also show some sort of proof, for example your family tree, for example if your father is your sponsor, then you can attach your family tree from your relevant governmental registration office, right? So you should just one thing in your mind, right? Visa officer is also human being, right? आपने उसको कन्विंस करना है। जिस तरह आप अपने किसी, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप समझे आई एम द वीजा ऑफिसर, you are going to convince me that okay, this document what they are required, so you have to provide them as much authentic documents as you can, for example, right? So it look like that. आपने उसको जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे आपकी सपोर्ट में उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। Okay, and just to share my personal experience with everyone, medical insurance definitely is very important. पोलिश एम्बेसी के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि किन कंपनीज के मेडिकल इंश्योरेंस वैलिड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इंश्योरेंस।
आप प्लीज उसके अलावा जो भी उन्होंने ऑथराइज की हुई है उसके अलावा किसी और से मत लीजिए, बिकॉज देन इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. And these insurance companies are very competitive. For example, with 5,000 to 10,000, you get a very good insurance. तो ये एक बहुत जरूरी है. And flight itinerary. Again, I just want to repeat, टिकट्स बुक नहीं करना है, जस्ट आइटनरी देना है. आइटनरी के लिए पैसे नहीं खर्चे करने होते. यू जस्ट हैव टू टेल कि किस दिन जाना है और किस दिन आना है. ये आपको ट्रैवल एजेंट इजीली बना के देगा, बिकॉज ही नोज दैट ही इज गोइंग टू गेट योर बिजनेस. सो फ्लाइट आइटनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पोलिश की जो वेबसाइट है एम्बेसी की, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि किस पीरियड ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है. दे आर वेरी पर्टिकुलर कि ये नहीं है कि आप कवर लेटर नीचे रख दिया और आइटनरी ऊपर लगा दिया. उनके वेबसाइट में क्लियर कट उन्होंने मेंशन किया है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होगा, लास्ट डॉक्यूमेंट क्या होगा. So just to present your case in a proper way, to get a good application, to get a good result, आप please follow करिए वो sequence को. ये बहुत जरूरी है. Over to you, sir. Let's go to the next slide, sir. So ये तमाम के तमाम documents, these are the documents you require, right? Just like some of the students have posted their question, right? So I will try to answer your questions at the end, right? So just we are finishing this presentation in 5-10 minutes. Then we will go to the question answer session. So stay tuned with us. Yeah. So cost of study, जैसा कि मैंने आपको बताया, cost of study depend upon for the bachelor degree. You should consider per year. For example, 2,000 to 3,000 depend upon the university and program, you can say, and the master degree depend upon 3,000 to 4,000 euros, right? These are the per year. और living मैंने जैसे आपको बताया, आप लेके चलें around 250 euro per month for the student is more than sufficient. Monthly expensive around, you can say 1,200 to 2,000 depending upon your lifestyle, and if you are living in the dorm, then 1,200 is sufficient. It includes the rent, food, clothing, transportation, study material, all these material. अब आपको समझ आ रही होगी why I say that this is the very cost effective education, right? तो आपका living expense बहुत कम है यहाँ पे और आपका study expense बहुत ज्यादा कम है. So this is the cost of living that you have. अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, बैचलर डिग्री जो होती है, कुछ कंट्रीज में 3 ईयर की होती है, कुछ 4 ईयर की. पोलैंड में 3 इयर्स की है बैचलर डिग्री. इट में 3 एकेडमिक ईयर्स, 6 सेमेस्टर्स की बैचलर डिग्री है और मास्टर्स आपकी 3 to 4 सेमेस्टर्स डिपेंडिंग अपॉन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 2 इयर्स मास्टर डिग्री एंड 3 इयर्स बैचलर डिग्री. मास्टर डिग्री में 3 to 4 सेमेस्टर्स होते हैं और थीसिस होता है मास्टर डिग्री में. एट द एंड थीसिस आर रिटर्नशिप. Another very good thing about the Poland, right? यहाँ पे अगर if you are studying here in Poland, right, you can go for 1 semester on the student exchange program in any European country. For example, आप चाहते हैं कि एक semester में स्पेन में गुजारना चाहता हूँ. I want to spend 1 semester in Germany. Yes? सर ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिए प्लीज. जी जी, देखिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बेसिकली आपकी जो यूनिवर्सिटी है, mostly more than 90% of the universities are registered with the Erasmus exchange program. Erasmus Mundus is a European Union scholarship. एक यूरोपीय यूनियन की बॉडी है जिसे हम Erasmus Mundus कहते हैं. वो एक स्कॉलरशिप बॉडी है जो कि पूरी दुनिया में एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करती है. अब आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, wherever you are studying in the university, more than 90% universities are affiliated through this scholarship exchange program. And every student, you can say more than 99% student, if you apply for some exchange program, what they will do, they will not ask anything extra and they will pay you the living expense as well. आपको लग रहा है जी पोलैंड में तो कामरान बहुत कम एक्सपेंसेस थे, बट जर्मनी में तो ज्यादा होंगे ना. जर्मनी में, स्वीडन में, डेनमार्क, नॉर्वे में. तो गुड थिंग इज व्हेन यू आर गोइंग टू द एक्सचेंज प्रोग्राम, देयर विल this Erasmus Mundus, this scholarship agency will pay you the living expense for that university, and you don't have to pay the fee of that university as well. For example, अगर हमारे यहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस 2,000 यूरो है, जर्मनी में शायद इससे ज्यादा हो, यूके में 10,000 हो, स्वीडन में 12,000 हो, आपके नॉर्वे में 5,000 हो. अब स्वीडन, जर्मनी फॉर एग्जाम्पल और अदर कंट्रीज में तो ज्यादा. जब आप एक्सचेंज में जाते हैं तो आपको यू डोंट हैव टू पे द फी, राइट?
The fee Mashallah. and the living will be paid to you by this scholarship exchange company, exchange organization that is working under the umbrella of the European Union, and all the European higher education institutes are registered with that. It means आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आप पढ़ रहे होंगे वो कम से कम यूरोप के हर कंट्री की 4-5 यूनिवर्सिटियों से अटैच होगी। तो आपको वो ऑप्शन देंगे जी ये 10 कंट्रीज हैं और ये 10 यूनिवर्सिटीज हैं, आप बताएं आपने एक्सचेंज किस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो आप अपने मास्टर्स में और बैचलर में एक सेमेस्टर के लिए आउट ऑफ पोलैंड जाके अपनी स्टडी हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, बल्कि आप जो आपका जो लिविंग है वो भी आपको स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इफ यू आर स्टडिंग इन यूरोप। And this is very important for students because first of all you get to know what is being practiced in other countries, and you can also get that remark on your CV that okay, you have studied in University X of Germany plus Y of Poland, and it really gives a broad perspective to the students. Alhamdulillah, Jazakallah sir for sharing this innovative thing. Thank you. Let's go to the next slide. The exchange programs are really very good. You just are browsing the culture, the living style of the people, and you feel confident as well. Then you will say sky is not more the limit, right? Normally we say sky is the limit. Sky is no more the limit, you can say. You can do whatever you want to do. जब आप different countries को browse करते हैं, then you feel confident in your personality. Then सबसे ज्यादा इससे another important question जो पूछते हैं जी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब का क्या सीन है, ज्यादातर ये कहते हैं, हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या सीन है जॉब का, तो जॉब शॉब मिलती है या बस। So the good question is here in Poland, right? Poland is one of the, you can say, best country in terms of providing jobs. You can say jobs are available, right? But you can say you cannot compare the income of Poland with the other European countries. Might be the income of the other European countries is more good than the Poland, but the job opportunities are more good here in Poland. आप स्टूडेंट हो, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, इवन के अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो गया मास्टर्स का, आप दूसरे साल में आपकी इंटर्नशिप चल रही है या आपका जो एक्सचेंज सेमेस्टर चल रहा है, तो आप अपना फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। स्टूडेंट ये आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। मोस्टली आप स्टडी के दौरान पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और पार्ट टाइम जॉब्स आपको बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं। In terms of odd jobs, you can say McDonald's, pizza delivery, or Uber. These kind of jobs are available, and the other jobs in the companies are also. You can have a very good internship. For example, I have seen a lot of my students. You can say they are working here in Google, Microsoft, Citibank, MoneyGram. A lot of companies they are working, right? अब जोकली मैं ये बात कहता हूँ, अगर आपको पोलैंड में जॉब नहीं मिलेगी तो आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन। पोलैंड इज सच अ गुड कंट्री इन टर्म्स ऑफ जॉब। अगर आप इतने नालायक हैं आपको पोलैंड में भी जॉब नहीं मिल रही, फिर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल को तो भूल जाएं आप बिल्कुल इसको। तो पोलैंड में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, यू कैन डू। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है, कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है आपकी यहाँ पे। इससे भी ज्यादा जो अच्छी बात है, जो आपके लिए बड़ी फैसिनेटिंग होगी, यहाँ पे अगर आप स्टडी कंप्लीट करते हो तो आपको ये नहीं कहेंगे कि यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडी एंड यू शुड गो बैक। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये 1 ईयर जॉब सर्च वीजा भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है, आपका रेजिडेंट परमिट एक्सपायर हो रहा है, आप अपनी डिग्री दिखा के आप 1 साल का जॉब सर्च वीजा भी ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। But I believe, just like I have more than, you can say, 2,000 students here in Warsaw, right? Because I'm teaching here since last 7 years, right? So, and most of them are from India specifically, right? So all my Indian students, you can say more than 90% of the students got their job before completion of their studies. 90% मैं exaggerate नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट। और पार्ट टाइम जॉब तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ही करता है। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि पार्ट टाइम जॉब से आप कितना अर्न कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब में ट्यूशन फी निकल सकती है, लिविंग निकल सकता है।
practically speaking, if you are joining a good university here in Poland, आप अपनी पार्ट टाइम जॉब से सिर्फ अपना लिविंग निकाल सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपना ट्यूशन फी का अरेंज करके आएं। ये सिर्फ 2-3 साल की बात है। अगर आप मास्टर पे आ रहे हैं 2 साल की बात है। उसके बाद आप इतना अच्छा सेटल हो जाते हो कि आपको पूरी जिंदगी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। हम लोग थोड़ा सा चूजी हो जाते हैं कि और डिफिकल्ट है, फीस कैसे निकलेगी। नहीं, ये आप पूरी लाइफ, यानी कि इफ यू आर 25 years old, rest of your life, so just like you will enjoy your status, your job, your profile, right? ये कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, राइट? तो अपने आप पे स्पेंड करें। पार्ट टाइम जॉब से यू कैन इजीली maintain your living expenses, and also sometimes a portion of the tuition fee can be taken from your part-time job. Full-time job बेहतर होती है, full-time job भी मिल जाती है। अमूमन लास्ट ईयर ऑफ स्टडीज से आपको फुल-टाइम जॉब्स ऑफर होना शुरू हो जाती हैं। आप हैरान हो जाएंगे, जबकि ये केस यूके और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। मैंने देखा है यूके और ऑस्ट्रेलिया में मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट सिर्फ पिज्जा डिलीवरी कर रहे होते हैं, जबकि मैंने पोलैंड में देखा है कि मेरे मास्टर्स और बैचलर के लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, दे आर वर्किंग इन पीएनजी, they are working in Citibank, they are working in Google, they are working in Microsoft, right? In all these big organizations, a lot of companies, you can say. Financial sector is booming, you can say, here in Poland, right? For example, अगर आपकी business की, IT की education है, then you can do whatever you want to. Job opportunities are really great. तो ये आपकी पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है। जी इरफान। Alhamdulillah, and I can share this with my personal experience in my organization also. हम जो last year students होते हैं, we take them on full time job basis. We start with an internship program and we see how the candidate is performing, and then if they are doing good, we absorb them. Alhamdulillah, in Poland the unemployment rate is very low, so and the job opportunities are immense. And in Poland is like the heart for Europe, because काफी सारे shared service organizations have done their setup in Poland. So from here they support many countries across Europe, many countries across Africa, Eurasia. So I totally agree, and I can see sir आपने next slide रखा है कि in case क्या इंशाल्लाह अगर हमारे मास्टर्स और बैचलर्स कंप्लीट होते हैं पोलैंड में, so how we can find jobs. So please let's go through that. So these are the websites, right? You can go through these websites and you will come to know that how good opportunities are available in Poland, right? तो आप इनको ब्राउज करके आप लोग अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट जॉब्स, और आप हैरान हो जाएंगे, a lot of jobs they don't require the Polish language, right? They require only English, specifically the multinational companies. Just I have mentioned a few of the multinational companies. They are providing jobs. If you know only English language, then you can have a very good job here in Poland. तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो सबसे जो बार मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, आइल्स रिक्वायर है या नहीं, या टॉफल रिक्वायर है या नहीं, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे नजर आया, तो मैं इसका आंसर जी, इसका बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक आंसर है। आपको ज्यादातर लोग ये बताएंगे आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए। आप सबसे पहले ये रियलाइज करें, हाउ मच इज दिस बिग अपॉर्चुनिटी, राइट? In most of the Polish universities, they don't require, you can say, the IELTS or TOEFL, but it is required, and it is the good thing. It is a great factor that could be in terms of visa acceptance ratio, right? If you have a very good IELTS score, visa officer, university, ये तमाम लोग समझते हैं कि this is a student. ये कोई डंकी लगाने के लिए ना ये भाग जाएगा यहाँ से, ये स्टूडेंट है। तो अपने आप को शो करें कि यू आर अ स्टूडेंट। आइल्ट्स इज नॉट अ बिग डील, यू कैन से। इसकी फीस को इतनी ज्यादा नहीं है जिस तरह हम लोग समझते हैं। वी शुड प्रिपेयर, वी शुड इन्वेस्ट ऑन योर, यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर एग्जांपल योर कैरियर, योर लाइफ स्टैंडर्ड, यू आर वांट टू चेंज एंड यू आर नॉट स्पेंडिंग, यू कैन से, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑन द आइल्ट्स फी। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हम देसी होने का। क्या समझते हैं कि जो आइल्ट्स नहीं चाहिए ना, हम नहीं देंगे आइल्ट्स, टॉफल नहीं चाहिए, हम नहीं देंगे। ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट द गुड यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड। इन गुड यूनिवर्सिटी दे रिक्वायर, even if it is written that they don't require that, but they prefer, you can say.
अगर आपने टॉप में जाना है, अपने आप को प्रूव करना है, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, राइट, फिर आप ये भी कहते हैं जी वीजा एक्सेप्टेंस रेशो अच्छी नहीं है। वीजा एक्सेप्टेंस रेशो इसलिए अच्छी नहीं है कि आपने एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, आपने आर्ट्स भी नहीं दिया, आपके ग्रेड भी बड़े बुरे हैं, आपने वो सारी की सारी चीजें चूज कर ली हैं जो कि आपको सीरियसनेस शो ही नहीं करती। आप अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें, आइल्स टॉफल करें, अच्छा स्कोर लगाएं, प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ वीजा ऑफिसर, देन यू कैन से, देन यू विल सी द डिफरेंस। तो मेरी सजेशन यही है तमाम स्टूडेंट्स को, यू हैव टाइम नाउ, यू हैव टाइम फॉर February 2022 session, you have time for October 2022 session, you have sufficient time, prepare yourself. आप सबसे पहले अपने आप से सवाल करें, आप करना क्या चाहते हैं। जब आप सोच लोगे कि जी मैंने यूरोप जाना है, मैंने यूएस जाना है, मैंने अमेरिका जाना है, मैंने कहीं जाना, फिर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो। ज्यादातर ये होता है हम लोग अपने आप पे बिलीव ही नहीं करते, कहते नहीं ये इतनी ज्यादा पैसे को यार कौन जमा कराएगा, छोड़ो प्रयास का क्या यार, रहने दो, पढ़ना भी पड़ेगा, फीस भी देनी पड़ेगी, सब कुछ। In short, you should prepare for the IELTS and TOEFL, and you should proceed with all the educational details, right? This is one of the most important thing and one of the most important, you can say, suggestion for you people, right? So I strongly recommend you to go through IELTS before applying admission, right? So although it's not required in some of the university, but it will create a big difference, not only in finding a good admission, in the acceptance of visa ratio, in terms of getting a good job here in Poland, it will open a lot of scenarios for you, a lot of windows for you, right? You will have a very good opportunities. Yes. जी इरफान भाई कोई और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मैं भी देखता हूँ, आप भी मुझे बताएं। श्योर, या काफी क्वेश्चंस आए सर, मैं वन बाय वन पिकअप करता हूँ। पहले सर आप ये बताइए कि बिकॉज आपने बताया कि IELTS, आइल्ट्स एंड टॉफल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट काफी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को ये नहीं पता है कि आइल्ट्स एंड टॉफल होता क्या है। तो सर थोड़ा सा डिटेल्स IELTS और टॉफल के बारे में प्लीज। बिल्कुल, इसमें ये चीज है कि जब भी आप अब्रॉड जाते हैं स्टडी के लिए, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन अब्रॉड, they want to check your language proficiency, right? Okay. Language proficiency को check करने के different, for example, you have applied in the bachelor degree or master degree and you want to study here in Poland in English language, right? They want to assess whether you have a grip on the English language or not. These are the English proficiency assessments, right? So IELTS हो गया, TOEFL हो गया, ये आपकी language proficiencies हैं, आपकी लैंग्वेज की कैपेबिलिटी को, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है। इससे ये पता लगता है यूनिवर्सिटी को कि आपको इस लैंग्वेज पे कितना ग्रिप है, राइट? तो इसलिए आप आइल्ट्स कैम्ब्रिज करता है, टॉफल, तो ये तमाम के तमाम अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपको तमाम की तमाम डिटेल्स, ये आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं जो कि आपको रिक्वायर होते हैं टू गेट एडमिशन इन डिफरेंट गुड यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। जी। And when we say proficiency, so proficiency both in terms of writing and speaking. Correct? Writing, speaking, listening, right? Listening, okay. Yeah. Okay. Yeah. तो आपका लिसनिंग का एग्जाम होता है, रीडिंग का होता है, राइटिंग का होता है, कंप्रीहेंशन का होता है, राइट? सो ये सारे के सारे जो है ना, ऐसे राइटिंग भी होता है इसमें, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी चेक करती हैं। Yeah, अगला सवाल, another question. Alhamdulillah, we are getting a lot of questions. So let me again tell our audience, on Zoom, आप please Q&A sections में अपने questions डाल दीजिए. Inshallah, we will cover all the questions. We have sufficient time, so please start putting your questions. YouTube के viewers, please आप comment section में अपने questions दीजिए. We have moderators sitting on YouTube channel. They will pass on the questions to us. Similarly on Facebook as well. तो सर और क्वेश्चन है, एक ये है कि why is part time working important while undergoing education in Poland? ये part time working क्यों करना है स्टूडेंट्स को, इसकी अहमियत क्या है? इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसमें एक फाइनेंशियल है फैक्टर और एक आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो, देन यू विल लर्न अ लॉट हाउ टू, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गेटिंग एजुकेशन? Either we are preparing ourselves for the job market,
or we are going to start our business, or we are going to be part of some organization, right? तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो ये आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, एंड यू हैव द हायर चांसेस फॉर गेटिंग अ गुड जॉब राइट आफ्टर योर एजुकेशन, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब एक्सपीरियंस. सेकंड थिंग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, आप लर्न भी कर रहे हो. इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, एंड इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मीटिंग योर एक्सपेंसेस. कमिंग टू मीटिंग द एक्सपेंसेस, तो ये पार्ट टाइम जॉब्स जो है ये कितना हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द एक्सपेंसेस? कैन माय लिविंग एक्सपेंस बिल्कुल करेगा, आप लिविंग एक्सपेंस आराम से निकाल सकते हैं, राइट? लेकिन और अच्छे अगर आप यूनिवर्सिटी में है तो आप लिविंग आराम से निकाल सकते हैं, बट इफ यू आर इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ योर स्टडीज, राइट, देन इवन यू कैन अर्न, यू कैन से फुल टाइम ट्यूशन फी एज वेल, क्योंकि उसमें लोड कम हो जाता है लास्ट ईयर में और आप बड़े स्मूथ हो जाते हैं. शुरू में अगर आप ज्यादा जॉब करना चाहते हो 20 आवर्स से ज्यादा, तो फिर क्या होता है, आपकी एजुकेशन सफर होती है. एजुकेशन सफर होती है तो फिर आप एजुकेशन से यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो जाते हैं. तो शुरू में कोशिश करें कि आप, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी, राइट, बट एट द एंड व्हेन यू गेट familiar with the education system, when you get familiar with the country, right, then you can have more number of hours of job. सर एक और क्वेश्चन है from our YouTube viewer के, let's say I have completed my masters, I went to do my masters in management, I completed that. उसके बाद मैं कितना साल और पोलैंड में रुक सकता हूँ without any questions from the authorities? Is there a time limit for that? इसमें ये होता है, देखिए, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो वहां पे आप अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं. रेजिडेंस, आपका रेजिडेंस कार्ड वैलिड होता है आपका कंप्लीशन ऑफ स्टडीज तक. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्टडीज कंप्लीट हो रही है सितंबर 2022 में, तो वो आपको कार्ड देंगे मैक्सिमम अक्टूबर 2022 तक का. वो कहेंगे यहाँ तक आपका लीगल स्टे है, जब आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से जा सकते हैं. लेकिन वो आपको भेजते नहीं है, आप जा सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप मजीद स्टे करना चाहते हैं, तो आपको अपना लीगलाइजेशन ऑफ स्टे, व्हाट विल बी द मेन रीजन दैट यू वांट टू स्टे इन पोलैंड? There could be multiple reasons. For example, you want to search for a job. It is a valid reason for Poland, right? आप कहते हैं कि मेरी स्टडी कंप्लीट होगी और मैं जॉब सर्च करना चाहता हूँ. Then you can apply for the residence card on the basis of job search visa by showing your degree. Secondly, अगर आपको जॉब मिल गई है तो आप अपना जॉब का सर्टिफिकेट लगाते हो और उसके बाद आप अपने रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं. You will get a job. और अगर आप अपना कोई बिजनेस लॉन्च कर लेते हो तो फिर भी आप अपना, यू हैव टू शो योर स्टे दैट व्हाई यू नीड योर स्टे हियर. आप ऐसे नहीं कर सकते मेरा दिल कर रहा है, आपका दिल नहीं कर रहा है, तो जस्ट लाइक, बट यू कैन हैव अ 1 year जॉब सर्च वीजा हियर इन पोलैंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर फुल टाइम बैचलर और मास्टर और द पीएचडी डिग्री. ओके सर, एक और क्वेश्चन है कि पोलैंड में जैसे पोलिश लैंग्वेज है, तो do I have to speak Polish? Do I have to learn Polish? What is your take on that? Exactly, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसमें देखें, आपने जहां पे भी रहना है, wherever you are living in whole world, right, you should know the native language, right, the local language basically. But for example, I'm here in Poland, right, so if I'm working here in the university, I'm dealing with only the English speaking professors and the students, right, फॉर एग्जाम्पल. बट मुझे आम लाइफ को रहने के लिए पॉलिश लैंग्वेज चाहिए, तो इट इज रिकमेंडेड देन यू स्टार्ट लर्निंग द पॉलिश लैंग्वेज, राइट. ग्रोसरी पे जाना है, आपने होटल पे जाना है, आपने कहीं पे भी जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, तो पॉलिश इज अ बिट डिफिकल्ट बट नॉट टू मच, राइट. जब आप स्टूडेंट होते हैं तो यू हैव वेरी गुड लर्निंग कैपेबिलिटी, आप लर्न कर लेते हैं, राइट. ऑल्दो यू कैन लिव जस्ट लाइक, यू कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग only with the English language, but it is recommended that you should participate in Polish learning programs as well. Yeah. सर, आपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताया था, and you mentioned about 20 hours of working. So ये पार्ट टाइम जॉब एवरीडे करना जरूरी है या alternate days स्टूडेंट्स कर सकते हैं ताकि they can focus on their studies? इसमें ज्यादातर स्टूडेंट वीकेंड पे करते हैं, राइट. 20 आवर्स का मतलब होता है कि 2 दिन अगर आप 10-10 घंटे जॉब कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल,
if you have 5 days of job, right, you can do part-time job at the weekend. Just like 20 hours per week होते हैं ये part-time job के concept है. 20 hours per week. आप 20 hours तक easily job कर सकते हो per week, right? और normally students weekend पे करते हैं या कुछ किसी दिन आपकी क्लास नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल टाइम टेबल ऐसा स्केड्यूल हुआ है कि आपकी 3 दिन क्लासेस हैं और 4 दिन क्लासेस नहीं है, या सिर्फ 9 to 2 क्लासेस हैं और 2 बजे के बाद आप सब समझते हैं आई कैन डू 5 hours ऑफ जॉब, राइट? So throughout the week you can do part-time job at any day. Okay, sir. YouTube में हमारे एक व्यूअर है Mr. Sheikh Junair. He is asking about diploma courses availability in Poland. So you mentioned about bachelor's, masters, but sir, diploma courses are they available? These are available in Poland? Yeah, these are also available, but I can recommend you try to proceed with the bachelor or master degree, right? फॉर एग्जाम्पल वीजा ऑफिसर के जहन में ये होता है कि भाई ये छोटा शॉर्ट डिप्लोमा अगर ये करने जा रहा है तो वाकई ये शॉर्ट डिप्लोमा करने जा रहा है कि यहाँ से वो आगे मूव करने के लिए जा रहा है, राइट? So try to get admission in the degree programs. Also the diploma programs are also available. You can have, but I think the chances of getting visa might be reduced. This is my perception. I might be wrong, you can say. But try to get admission in the full degree programs. It's recommended. Okay. So there is one more question from our YouTube viewer. Universities. जैसे हमने course complete कर लिया with the university. Do they provide any kind of job opportunities or maybe a kind of environment wherein the corporates can come to the campus, do an interview, or any kind of career development that universities support? Exactly, very right. Mostly universities जो है तमाम की तमाम वहां पे job seminars होते हैं, different companies आती हैं. For example, अगर मैं बात करूं अपनी यूनिवर्सिटी की, as I was the part of University of Warsaw in the faculty of management, different companies. We have the job fair once in a year, right? Different companies are coming to the universities. You can appear in job interview, right? They can even hire you. इस तरह की facilities available होती हैं. Moreover, once you are in Poland, right, as I have shown you different job portals, right? You can visit any job portal and you can apply for the different kind of jobs as well. यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है आपको फैसिलिटी. आपके जो पेयर्स होते हैं, आपके जो अदर स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली जॉब कर रहे होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, आपके टीचर हेल्प कर देते हैं. एंड यू कैन से यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम दीज जॉब पोर्टल्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू. सर फेसबुक पे एक क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर रशाद. ही इज सेइंग कि मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया इन मैनेजमेंट इन इंडिया in the year 2000 and now he's looking out for a job, but basis his masters in India, can he again apply for masters in Poland? Can he do further more studies in Poland? Yes, he can apply. Yeah, if you have already completed your master degree, you can apply for the master degree, right? But you have to justify the visa officer why, right? Okay, you should convince. For example, if you have done your for example, bachelor degree in some other discipline and you are choosing the master degree, some other discipline, then you can say, okay, my interest is moving towards that because of this opportunity. Either if you are working in some organization, then you can say, okay, I have worked for 2 years right after my degree and I realize that I feel that I need more education in this discipline, then I want to proceed my master level. Got it. Then there is a question from Hamad in Zoom. He is asking, can I pay a semester fee before applying for visa? Like visa apply करने के पहला क्या मुझे फीस पे करना जरूरी है? जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमाद. आपको जब भी वीजा आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले आपने यूनिवर्सिटी में फी जमा करानी होती है, यूनिवर्सिटी के अकाउंट में. अगर आपको रिफ्यूजल आती है तो मोस्टली यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक डेडलाइन देती है, वो आपको आपकी फी रिफंड कर देती है. तो just like you have to pay the fee, 1 year fee before applying for the visa. So based on your experience with the students, what is the ratio of visa officer denying the visa if the documents are well in place? What have you heard from your students community, sir? It's a very, you can say, the complicated question, you can say, very abstract question, you can say. As I told you earlier, visa acceptance depend upon the multiple factors, right?
फॉर एग्जाम्पल मोस्टली क्या होता है कि यूनिवर्सिटी पोलैंड के लिए जो स्टूडेंट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के लिए और यूके के लिए अप्लाई कर देते हैं, और बाकी जो जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते वो पोलैंड के लिए करते हैं। तो फिर क्या होगा, वीजा एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो जाएगी क्योंकि वो सीरियस स्टूडेंट नहीं होते। जिस तरह अक्सर और बेशतर ये देखा गया कि हम लोग आइल्स ही नहीं करते, जबकि यूके में जो है वो आइल्स देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देते हैं, अमेरिका के लिए टॉफल तैयार करके जाते हैं, सब कुछ करते हैं। इफ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड देन द वीजा रेशियो इज वेरी गुड. If you are not very well prepared, then the visa issue could be different, you can say. It depends upon how much good profile you have, how much is the good university you have, how much requirements you are fulfilling for the said programs, right? आपके पास IELTS हो, अच्छी यूनिवर्सिटी हो, बैंक स्टेटमेंट हो, आपके पास इवन के गैप भी हो और रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो आपका दरमियान में, अगर आप ये सारी चीजें करते हो, यू हैव अ वेरी गुड वीजा रेशियो, राइट? बट जस्ट लाइक ज्यादातर स्टूडेंट हमारे जो होते हैं साउथ एशिया से, वो यही कह रहे होते हैं कि वीजा नहीं लगेगा, वीजा नहीं लगेगा। दे आर बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कन्विंस देमसेल्फ दैट दे विल नॉट गेट द वीजा। आप इस चीज से बाहर निकलें पहले, राइट? यू विल गेट द वीजा, दे हैव ओपन द एम्बेसी फॉर यू इफ यू हैव अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, इफ यू आर वेरी सीरियस स्टूडेंट, राइट? अक्सर और बेशतर तो इसी चीज में बेचारे रह जाते हैं कि जो भाई कोई सस्ती यूनिवर्सिटी बताएं हमें, कोई छोटी यूनिवर्सिटी बताएं हमें। जब आपकी प्रायोरिटी देखें, वीजा ऑफिसर इज आल्सो साइकोलॉजिस्ट, उसको पता लग जाता है। इस तरह अब उर्दू में एक मिसाल है ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। इंटेंशंस का पता लगाया जा सकता है। दे हैव अ वेरी डीप एक्सपीरियंस। So if you are applying in a very small university without IELTS, these things, then I think you should not expect the good acceptance. Yeah. Scholarship related question. जी. Got it. Sir, scholarship related question on our YouTube channel. Person is asking whether scholarship is available for doing MTech or Masters in Science, these kind of courses. What is your take on that, sir? टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रिलेटेड अगर कोई कोर्स करता है तो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है क्या? जी, जहाँ तक स्कॉलरशिप का ताल्लुक है, यहाँ पे भी एक अपने जूम पे भी एक मीर बुशरा, इन्होंने भी क्वेश्चन किया स्कॉलरशिप से रेलेवेंट, और आपने भी किया। लेकिन स्कॉलरशिप्स जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादातर यूरोपीय यूनियन के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं। जब आप यूरोपीय यूनियन का स्कॉलरशिप विन करते हो तो देन यू कैन चूज डिफरेंट कंट्रीज एज वेल। For example, I have won this Erasmus Mundus European Union scholarship, and I have chosen Poland to avail this European Union scholarship, right? My scholarship was on the basis of the European Union. Moreover, you have a lot of good scholarships here in Poland as well, in the Polish institution, Polish Academy of Science. You have the NAVA website. I have here 3 websites, right, with you. A lot of scholarships are available. Scholarships are always very competitive. Number one, you should prepare yourself. For example, if you are applying for the PhD, right, just like this Mir Bushra is asking for, if you are in the PhD, then you want to apply for the PhD, right? You should have a very good proposal, right? For example, the first step of getting admission in PhD on scholarship basis is a good proposal that you are going to convince your supervisor. You have to have acceptance from any supervisor before applying admission in the PhD. Similar is the case whenever you are coming to postdoc, right after the PhD. You will check the projects, you will check the supervisor. If your area of specialization is very connected with the one that is required by the institution, right, then you will apply over there and you will be in contact with them, right? So depend करता है आप खुद। आपको जब स्कॉलरशिप की बात होती है तो अपने आप को अपने और ज्यादा एनर्जेटिक करना, अपने आप को और ज्यादा करना। अब देखिए, क्लर्क की जॉब लेनी हो आपको कितना मुश्किल होता है, और आप क्या चाह रहे हो कि आपको जॉब मिल रही है। स्कॉलरशिप इज अराउंड, आप समझ लें कि 1000 यूरो पर मंथ, 1500 यूरो पर मंथ, 800 यूरो पर मंथ। इसका मतलब है आपको 50,000 से 1 लाख के बीच में तनख्वाह मिलेगी अगले 3-4 साल, और उसके लिए आप सीरियस नहीं है। अगर आप उसके लिए सीरियस नहीं है तो कसूर एजेंसीज का नहीं है जो आपको एडमिशन या आपको स्कॉलरशिप नहीं दे रही, कसूर हमारा है कि हम लोग वेरी वेल प्रिपेयर नहीं। हमें समझना चाहिए कि दिस इज द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी एंड वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ इन अ वेरी गुड मैनर।
सर जूम पे 2-3 क्वेश्चन से विच आर वेरी रिलेटेड, मैं 2-3 क्वेश्चंस को मिक्स करके आपसे बता दूंगा. एक है एडवोकेट एस अहमदी, वो पूछ रहे हैं, प्लस हसीब पूछ रहे हैं. इनका बेसिक क्वेश्चन ये है कि टू गेट एडमिशन टू द न्यू यूनिवर्सिटी, तो हमारी जो प्रीवियस डिग्रीज है उसमें कोई बेसिक परसेंटेज क्राइटेरिया है क्या? जैसे 50% लाना है या किसी सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी चाहिए, इस तरीके का कुछ क्राइटेरिया है क्या to get university admissions? Very good question. Basically, eligibility criteria varies from university to university, right? For example, it depends upon, if I'm talking about, you can say some good university, they require higher percentage, and specifically in the academic background, and they might require a very good score in the language proficiency as well. तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इवन कि आपके अगर 50% मार्क्स भी हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन. सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक क्राइटेरिया नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूनिवर्सिटी देख रही होती है. So it depends upon university. If you have more than 50% of your grades, then even you can apply in different universities. Better is to browse the respective website of the university, and then you can explore what is the requirement. But practically speaking, if you have more than 50% marks, right, then you will be eligible in different universities. There are few questions which I think are in my domain, so let me attempt that. On YouTube, Rahmani organization, they are asking about law courses from Poland after 12th. So Rahmani, I think best option is you go to the Vistula University website or University of Warsaw website. There are certain international law related courses which are available in Poland, which you can go through that, and if you have any questions, please connect with us. There is a question from Khan Saad on Zoom. They are asking about data analyst course. Is it available in Poland? Yes, exactly. Data analysis course is available at the University of Warsaw. You can say Warsaw School of Economics. These are very good universities. If you go through the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, then you will find this course. If you go through the Warsaw School of Economics, then you will find this Masters in Data Science course. This is a very good program. Some people are asking about doing job remotely, like working for Poland organizations. Just like once you are here, for example, right? Once you are here, you are working here, right? Normally, the companies, they are going to contract you, right? They need your presence here. Either just like I'm teaching here in Poland since last 3 semesters online, but I'm here in Poland now, right? So this is the point. Absolutely. So just like remote job is, it depends upon, but very few jobs are available. If it is, for example, very highly professional, if they are looking for someone and they did not find anyone in Europe and you are competent enough, right? They might hire you, but they will definitely ask you to join the company here in Poland first time. Absolutely. From initially, a remote job is maximum not available in the initial stage. And one of the reason for that is the tax. The local government would like to also get taxes on the income. So that is why remote jobs are not there. You have to work. You have to be present in Poland to work in Poland. Sir, there is a question from Ansari on Zoom. They would like to know more about Vistula University. What is your take on Vistula University, sir? Vistula University is one of the good university, you can say, in terms of private sector, right? It's a big university, good reputation, you can say, right? Just like it is one of the private university. If you are going towards the private university, you can have, for example, here Vistula University, Wazarski, Collegium Civitas, you can say Kosminski University. These are some of the big centers, big university in terms of private sector. Okay, Hamad from Zoom is asking, sir, now it will be very quick fire because we have just few more minutes left. Yeah, quick fire questions. Hamad from Zoom, I'm an IT expert, but I'm going for bachelor's in business. Is there a chance of my visa refusal? I think no. It makes sense. If you have the IT background, you can go through the business as well, right? Okay, super. Yeah. Sir, for aviation background, which is a good university? Aviation ke liye, I think Wazarski University is also providing the aviation. And also some other. If you will Google study in Poland.pl,
then he will show you with respect to your discipline all universities that is offering that program. Got it. Got it. Sir, there is one more question on Zoom. Logistics. Yeah. Are there any courses on the logistics and supply chain side? A lot of courses. For example, all these private universities, for example, the Warsaw School of Business, you can say, Vistula, Kosmisky, right? All these are basically logistics. These are more specializations in the business as well. For example, if you are getting your business education, you can have a specialization of marketing, HR, finance, right? Some of the specializations as a logistic is also available, and some of the degrees are also available in logistics. Yes. Sir, one of our esteemed Ummeed member, Advocate Yamin Thara, who has done his postgraduate in India, is asking whether postgraduate opportunities are available in Poland. Exactly. Yes. Exactly. And you are a very good example. Yamin sir, I can give you contact of Dr. Kamran. He can definitely help us on that piece. Alhamdulillah, questions are coming on Zoom as well as on YouTube, but because of lack of time, we are not able to take further questions. But I'm sure most of your questions have been answered in the session. ये सेशन के रिकॉर्डिंग SDI चैनल के YouTube पे SDI चैनल पे अवेलेबल है. आप प्लीज गो थ्रू करिए. इन केस अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चन है तो आप SDI उम्मीद टीम से राब्ता करिए. आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पुट इन करिए. Inshallah, we will definitely answer all your questions on the comment section. A big round of applause and thank you to Dr. Muhammad Kamran sir. Sir, thank you so much for sharing with the student community the education opportunities in Poland. And most importantly, sir, which I personally found is your inspiration. You are a very big inspiration for the community. Thank you, sir. I'm sure with your guidance, we'll see more and more students getting into higher education and definitely serving our community in the future. Jazakallah, sir. Over to the next slide. Thank you, Thank you very much, everyone. Thank you very much to all of you. We will be in touch. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you. Let's go to the next slide, sir. In terms of, there are a few more things which I want to share with the student community. Please give us your feedback. Connect with us on our social media handles. Ummeed is available on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Please subscribe to our channels, SDI, SDI Media, and SDI Short Clips. Every week we do the webinar on different aspects. So you will get a lot of notifications. So please stay connected to our social media handles. Next slide, sir. And most importantly, there is a good news. Please click, sir. There is a good news which is coming up. SDI Ummeed portal is coming up. Inshallah, the portal will be launched on 19th of September 2021, exactly 1 week from now. एक हफ्ते के बाद, अगले हफ्ते, next Sunday, we are launching SDI Ummeed portal. It's a very good portal जहाँ पे students can connect with us on various topics. इंशाल्लाह हमारे जितने भी सेशंस है उसके वीडियोस भी हम इस पे लोड करेंगे. It will be a connect point for our students. You will have our counselors available on the portal. If you need any support, please visit our portal. Most importantly, join us next week, 19th September. Our portal will be launched and more information will be given on that. Because ये काफी सारे questions आ रहे थे, काफी students community ने हमें पूछा कि SDI का portal क्यों नहीं है, SDI उम्मीद का. So we are coming up. And last but not the least, जैसे हमारा process है, we end with the dua and इस दुआ की फजीलत ये है, if a gathering is concluded with the recitation of this dua, whatever good has been discussed, Allah subhanahu wa ta'ala puts the stamp of his mercy upon it. And anything said or wrong done, Allah subhanahu wa ta'ala forgives it before people disperse from the gathering. That is the fazilat of this dua. So let me recite it. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. इसी के साथ
मैं इरफान मेघानी आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, जहां पे हम SDI उम्मीद का पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू बी अवेलेबल विद अस। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum assalam. Thank you everyone. Goodbye. Allah Hafiz. Bye.